Okay. So we continue. Are you able to see my screen, both of you? Yeah. Yes. Okay, let's continue. J'allume, I turn on. Tu allumes, you turn on. Il allume, he, she turn on. Nous allumons, we turn on. Vous allumez, you turn on. Elle allume, they turn on. Okay, can we try reading it first? Okay, yes, sir. You go ahead and then Avir. Akvir. Yeah, you can read it, please. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Akvir, you go ahead. Maybe he's stuck somewhere. I don't know. Je Yeah. allume, tu allumes, il allume, nous Mhm. allumons, vous allumez, il allume. Very good. Il allume. So you're able to catch the little changes, difference in the pronunciation as well. अब हम पूरा sentence बनाएंगे. La lumière. Light is considered as femina in French. रोशनी. हिंदी में भी रोशनी. Okay. J'allume la lumière. I turn on the light. Tu allumes la lumière. You turn on the light. Elle allume la lumière. He, she turn on the light. Nous allumons la lumière. We turn on the light. Vous allumez la lumière. You turn on the light. Elle allume la lumière. They turn on the light. Okay? Yeah. Can you try speaking this now, Richard? Je Je, allume la lumière, tu allumes la lumière, il allume la lumière, nous allumons la lumière, vous allumez la lumière, il allume la lumière. Okay. Yes, sir. Can you speak now? Possible? yeah. Yeah. Mhm. Je allume la lumière. Tu allumer, tu allumer la lumière. Il allume la lumière. Nous allumons la lumière. Vous allumez la lumière. Il allume la lumière. Okay, perfect. A little recap before we go ahead. J'allume, I turn on. Tu allumes, you turn on. Elle allume, he, she turn on. Nous allumons, we turn on. Vous allumez, you turn on. Elle allume, they turn on. Okay. Quelqu'un m'appelle. We're going to see it later. Okay. So the next thing that we're going to do is, you see there's a woman. She's carrying something. So the action of carrying is called as what? En français? Apporter. Okay. Apporter means to carry. She's carrying the bottle of wine maybe. Okay. Again, you see ER ending, तो क्या pattern रहेगा? E, ES, E, ONS, EZ, and ET. So once you do it with patterns like this, it's very easy for you to, learn it step by step, the language. J'apporte, I carry. Tu apportes, you carry. Elle apporte, he, she carry. Nous apportons, we carry. Vous apportez, you carry. Elle apporte, they carry. Yeah. Can we try speaking this in turns, please? Je apporte, tu apportes, nous apportons, il apporte, vous apportez, ils apportent. C'est bon? Yeah, c'est bon. Yes. Uh, Go ahead, Avik. Je apporte, tu apportes, il apporte, nous apportons, vous apportez, il apporte. J'apporte, I carry. Tu apportes, you carry. Elle apporte, he, she carry. Nous apportons, we carry. Vous apportez, you carry. Elle apporte, they carry. Okay. J'apporte, now you see bottle. Bottle is considered as femina en français. La bouteille. Okay, you're going to divide. अगर कोई आपको difficult word आ रहा है French में, आपको syllable divide करने हैं दो, and then you have to speak. Bouteille. Okay, like this. J'apporte la bouteille. I carry the bottle.
Tu apportes la bouteille. You carry the bottle. Elle apporte la bouteille. She carried the bottle. Nous apportons la bouteille. We carry the bottle. Vous apportez la bouteille. He carry the bottle. Sorry, you carry the bottle. Elle apporte la bouteille. They carry the bottle. Yes, can we try speaking? Yeah, please take chance and speak. Je apporte la bouteille. Tu apportes la bouteille. Il apporte la bouteille. Nous apportons la bouteille. Vous apportez la bouteille. Elles apportent la bouteille. So you speak and then we move ahead. Both of you have taken chance and spoken. Hello. Okay, I'm moving ahead. Okay. Let me give you a little recap of what we've done. J'apporte, I carry. Tu apportes, you carry. Elle apporte, he, she carry. Nous apportons, we carry. Vous apportez, you carry. Elle apporte, they carry. ठीक है? अभी हम आगे चलते हैं. Next. So you see, I'm using this verb appeler. अभी जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, when we are going to prepare for the TEF examination, उसमें एक सेक्शन होता है. उसमें क्या सेक्शन होता है? सेक्शन का नाम होता है फे दिवार सेक्शन. फे दिवार सेक्शन में आपको ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें आप नॉर्मल लाइफ में नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ चाइल्ड हु इज ड्रॉनिंग इन वाटर, देर इज अ मंकी इन द सुपरमार्केट, या कहीं फायर लग गई है. तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है. फे दिवार सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन का ए. ठीक है? तो उसकी तैयारी हम आपको शुरू से ही ऐसे कराते हैं कि वी ट्राई टू गिव यू दोज वर्ब्स एंड वोकैबुलरी जो आपके उस सेक्शन में यूज हो जाएगी, राइटिंग सेक्शन में, जब हम एंड में आपको वहां तक लेके जाएंगे. सो लाइक राइट नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस वर्ब कॉल्ड एज एप्पले. एप्पले का मतलब क्या होता है? टू कॉल. अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई मर रहा है, कोई ड्राउन हो रहा है, कोई मंकी आ गया, कुछ भी आ गया, व्हाट यू गोइंग टू डू एट दैट टाइम? यू गोइंग टू कॉल. Maybe you're going to call your emergency services, or you're going to call the police, so like that. Okay. So appelé. Appelé means to call. Again, er ending verb है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Er ending. We are going to write as e, es, e, ons, ez, and ent. J'appelle. I call. Tu appelles. You call. Il, elle appelle. He, she call. Nous appelons. We call. Vous appelez. You call. Il, elle appelle. They call. ठीक है? समझ आया आपको क्या ये? J'appelle, I call. Tu appelles, you call. Il, elle appelle, he, she call. Nous appelons, we call. Vous appelez, you call. Il, elle appelle, they call. Yeah, can we try speaking this once? एक बारी बोलेंगे आप इसको? Je appelle, tu appelles, elle appelle, nous appelons, vous appelle, il appelle. Okay, perfect. Okay, let's try to create a full sentence with it. Full sentence कैसे बनेगा? La police. Police is considered as femina in French. ठीक है? तो emergency situation में हम किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं. Okay? J'appelle la police. I call the police. Tu appelles la police. You call the police. Il, elle appelle la police. He, she call the police. Nous appelons la police. We call the police. Vous appelez la police. You call the police. Il, elle appelle la police. They call the police. ठीक है? Can you try speaking the full sentence now, please? Je appelle la police, tu appelles la police, elle appelle la police, nous appelons la police, vous appelez la police, il appelle la police. Okay, perfect. Right? Then what do we do is
वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। एक बार रिवाइज करते हैं इसके, आप छोटे फ्लैश कार्ड भी बना के रख सकते हो ताकि आपको भूले ना ये रूल। सो प्रेजेंट टेंस में अगर ईआर एंडिंग वर्ब है, कॉन्जुगेशन कैसी रहेगी? इट्स गोइंग टू एंड, कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस: जो विल एंड विद ई, क्यू एज ई एस, इल एल एज ई, नु एज ओ एन एस, वू एज ई जेड एंड इल एल एज ई एन टी। ये कॉन्जुगेशन रहेगी ईआर एंडिंग की, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर कैटेगरी, वी विल जस्ट टच अपॉन दैट कैटेगरी ताकि आपको समझ आए। अभी हमने एक कैटेगरी कर ली है, एक बॉक्स ईयर एंडिंग। अब हम करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, वो कौन सा है? आई आर एंडिंग कैटेगरी। आई आर एंडिंग कैटेगरी और आर ई एंडिंग कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नो वो इल एल का देखोगे, इट्स एंडिंग इज सेम, ओ एन एस ओ एन एस ओ एन एस, ई जेड ई जेड ई जेड, ई एन टी ई एन टी ई एन टी। बट हियर इन आई आर देर इज एन एक्सेप्शन, हम आई डबल एस डाल देते हैं आगे। और जर्ब के साथ आई एस एंडिंग है, क्यू के साथ आई एस एंडिंग है, इल एल के साथ आई टी है। तो जब आप ये रिविजन करते रहोगे क्लास में, सो यू गेट अकस्टम टू इट एंड यू वेरी इजिली आर एबल टू मेक सेंटेंसेस देन। ठीक है, अभी हम एक सिनेरियो लेंगे। आई होप यू नो अबाउट टॉम क्रूज, ही इज अ वेरी गुड एक्शन हीरो, ही इज ओल्ड नाउ, 60 प्लस, बट was a very nice Hollywood action hero. So we are trying to relate this with this word, this verb called as agir. Agir means to take action. Just like I said, that French people are very ferocious. They believe in taking action, immediate action on whatever they think about. Okay, so agir means to act. Again, ir ending है तो इसकी ending अब कैसे बन जाएगी? It would be is, is, it, ISSONS, ISSEZ, ISSENT। ठीक है, जाजी का मतलब होता है आई एक्ट, क्यू एजी का मतलब होता है यू एक्ट, इल एल एजी ही शी एक्ट, नु एजी सो वी एक्ट, वू एजी से यू एक्ट, इल एल एजीस दे एक्ट। ओके, कैन वी ट्राई स्पीकिंग दिस वंस? Je agis, tu agis, il agis. Nous agissons, vous agissez, il agisse. Perfect. I do see that you're catching hold of pronunciation very fast. Okay, so that's good. Sir, will you not be able to speak? I think so. He's traveling somewhere. Okay, not a problem. Let's try Uh, to make one last. Will you be able Je to speak? agis, Yeah. tu agis, il agit, nous agissons, vous agissez, il agissent. Okay, perfect. So, let's try to make a big complicated sentence with it in French. Pour का मतलब क्या होता है? For. ले द्रुआ, द्रुआ मतलब हमारे राइट्स। ये लोग बहुत ज्यादा अपने राइट्स के लिए बोलते हैं, फ्रेंच लोग। ओके, दे फम ऑफ वुमन। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक इट दिस वे एंड create a full sentence. Je Jaji, agis, oh, sorry. no, you are excited to speak, you can, why Yeah. not? Please Je go ahead. agis pour les droits la femme, Mhm. des femmes, sorry. Very good. Tu agis pour les droits des femmes. Il agit pour les droits des femmes. Nous agissons les droits des femmes. Vous agissons pour les droits des femmes. Il agissent pour le droit des femmes. De Okay, femmes. It. okay, Avneet, let's make it a little creative. You're going to say pour les droits des hommes. Okay, there should be someone who should be fighting for the rights of man also. Okay, you would say j'agis pour les droits des hommes. Des hommes means man. Okay, yeah, you can speak the full sentence like that. Je agis pour les droits des femmes. Tu agis pour les droits des femmes. Il agit pour les droits. Des hommes, good. Nous agissons pour les droits des femmes. Vous agissez
pour les droits des femmes. Ils agissent pour les droits des femmes. So very good, very good. So within the first class, if you are able to speak this complicated sentence, that means you can very easily uh, like integrate with this language. It's not going to be very tough for you. Okay. But don't worry much about the pronunciation part. Pronunciation is going to come over the time only. Okay. We'll do one last verb and then I'm going to walk you through as to how my modules are going to look like, what are the things that you're going to receive, etc., and what are going to be a teaching strategy in the future. Okay. So that you have a little insight. So here you have this guy. He's my favorite one. He's Leonardo DiCaprio. Okay. He played a role in the movie Titanic. So what is he doing right now? What action is he performing? Clapping. Clapping or applauding. So the action of applauding some for somebody or clapping is called as applaudir. Again, you see, since it is IR ending, so how are we going to terminate? IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Okay, so let's try speaking it now. J'applaudis, I applaud or I clap. Tu applaudis, you applaud or you clap. Il, elle applaudit, he, she applaud or he, she clap. Nous applaudissons, we applaud or we clap. Vous applaudissez, you applaud or you clap. Il, elle applaudissent, they applaud or they clap. Yeah. Can we try speaking this? J'applaudis. Tu Mhm. applaudis. Il applaudait. Nous applaudissons. Vous applaudissez. Il applaudissait. Mhm. Je Yes. applaudis, tu applaudis, il, elle applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils, elles applaudissent. Hmm. Let me try making the full sentence with it. अब जो है ना क्यूबेक की हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत अभी आपको हिस्ट्री में नहीं जाना है बट आपको क्यूबेक और फ्रांस की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी चाहिए बिफोर यू टेक दिस एग्जाम रीजन बीइंग वही मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कई बार लिसनिंग में रीडिंग में राइटिंग में यू मे नेवर नो सम टाइप काइंड ऑफ टॉपिक्स इस तरह से आ जाते हैं ठीक है मोस्टली तो इजी टॉपिक्स रहते हैं बट यू हैव टू एक्चुअली नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्यूबेक and France. Okay, so these French people they are trying to take that region from Canada. Quebec वो अपना ही मानते हैं फ्रेंच लोग. ओके जब आप फ्रांस जाओगे ना उनको बोलोगे कि भाई क्यूबेक वो कहते हैं वो तो हमारा रीजन है. ओके सो इट्स funny also but yeah this is how the world politics is operating because of which French language is holding precedence nowadays and हमें तो उससे मतलब है ना कि हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे बट देयर इज अ हिस्ट्री देयर इज ऑलवेज अ हिस्ट्री बिहाइंड why these things are happening. Okay, so I'm going to read this out. J'applaudis pour la actrice. Actrice means actress. Québécoise. Québécoise means Quebec region. Quebec region's actress है. Tu applaudis pour la actrice québécoise. Il applaudit pour la actrice québécoise. Nous applaudissons pour la actrice québécoise. Vous applaudissez pour la actrice québécoise. Il elle applaudissent pour la actrice québécoise. Québécoise means someone who's from the Quebec region. Someone from who's Paris is going to say, Je suis parisien. I am from Paris. Je suis québécoise. I am from Quebec region. Okay. Yeah, so this is how the strategy is going to remain. Okay, इस तरह से आपको PPTs दिखाई जाएंगी. आप उसमें से हर रोज नोट्स लोगे, अपने नोट्स बनाओगे. आपको ये रिकॉर्डिंग्स भी सेंड कर दूंगी मैं. Okay, I'm going to share these recordings with you. So I'm going to walk you through as to how my notes and everything is going to look like so that you have an idea. Okay, let me do the screen share. ठीक है. Wait. You cannot minimize Zoom workplace when you're recording this video. Okay. Share it then. Okay. I'll resume this now.
Are you able to see my screen now? Yes. ठीक है? So see, we generally do it this way that you would be having the presentations like this. Sometimes I teach like this in a story format and कोई भी हमने tenses वगैरह करने हैं तो वो story के थ्रू होगा ऐसे ठीक है and for example if we are doing some concept कोई grammar concept अगर हमारे पास time होता है we do use some again situationals and stories like this. Have you seen the movie Harry Potter? ठीक है फॉर एग्जाम्पल द ड्यूटेला का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हम हैरी पॉटर की स्टोरी लेके फिर उसके साथ इंटीग्रेट करके उसको पढ़ते हैं ठीक है एंड इट्स नॉट जस्ट कि फ्रेंच में भी है इंग्लिश में भी होता है एंड वी ट्राई टू डू इट इन हिंदी एज वेल so that you know the concept is absolutely clear to you apart from it this is how the modules are going to look like you would be doing some dialogues on the daily basis ठीक है क्योंकि डायलॉग बोलने और समझने और रिकॉर्ड करने बहुत जरूरी है जब जब तक आप बोलोगे नहीं क्लास में हाउ वुड यू लर्न राइट ठीक है